Assalamualaikum class. I hope you all are doing great. Today we are going to start addition law and we'll be practicing some more questions related to addition law. Firstly, we can have a recap that what we have studied in previous lecture. We have seen the basic application of probability, that where probability can be used in our daily life. We have practiced different questions related to the classical approach of probability. Furthermore, we have interpreted the results that were obtained by using the techniques of probability. So today we'll be practicing some more questions related to addition law. Firstly, we can recall that what is addition law. Suppose if you have two events A and B, and you have to find that particular event, or you can simply say that it is an event A or B or both, because probability A union B means it is either in A or in B or in both. Then we're supposed to use this addition law. या at least का word use हो, commas given हो, या फिर either or का word use किया गया हो, then we're supposed to use this addition law. So that is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B. And if you have two events A and B and they are mutually exclusive. Mutually exclusive means that nothing is common in between both of these events. So simply ये जो term होगी वो zero हो जाएगी. And then you're just left with this law, that is probability A union B is equal to probability A plus probability B. So continuing the addition law, and this rule can be extended to 3 or even more events. For instance, if you have 3 events, then the probability A union B union C will be equal to probability A plus probability B plus probability C. The individual events will be written with the plus sign. Then comes the 2-2 combination ones. तो उसको आपने माइनस साइन के साथ लिखना है, और वो कॉम्बिनेशंस किस तरह से आए आपके पास? Probability A intersection B, probability A intersection C, minus probability B intersection C. So we'll just write both of these combinations with the minus sign. Then comes the third one, means 3 के combinations जो होंगे वो plus sign के साथ. So plus minus up till so on, इस तरह आपके पास addition law extend हो जाएगा. Individual events है तो plus का sign, 2-2 के combinations है तो minus का sign, और फिर 3-3 के combination है तो plus का sign. Coming towards the example, in a math class of 30 students, 17 are boys and 13 are girls. On a unit test, 4 boys and 5 girls made an A grade. If a student is chosen at random from the class, what is the probability of choosing a girl or an A student? Simply, इस क्वेश्चन में देखो और का वर्ड यूज किया गया है, तो और से पहले वाले को एक इवेंट डिफाइन कर दो और के बाद वाले को सेकंड इवेंट डिफाइन कर दो. So according to the question, you have defined an event A as a girl is chosen and an event B as an A student is chosen. Simply और से पहले वाले को event A को define कर दिया है और के बाद वाले को event B define कर दिया है. So you have to find the probability that if a girl is chosen or an A student is chosen. So addition law के मुताबिक आपके पास यही रूल बनता है. By default आप यही लिखोगे because आपके पास अभी 2 रूल्स आपने पढ़े हैं, either this one or this one in the case if you have 2 events. लेकिन by default यही लिखो और फिर क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लो कि A और B में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है. अगर तो है then well and good, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ उस टर्म की जगह 0 आ जाएगा. मीन्स दोनों के अगर कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है तो सिंपली यू विल जस्ट राइट 0 इंस्टेड ऑफ दिस. ऑलराइट. So coming towards the question, probability of an event A plus probability of an event B minus probability A intersection B. Now what is probability of an event A? According to the classical definition of probability, probability of an event A is defined as number of sample points in an event A divided by number of sample points in the entire sample space. That means total number of students maths class में कितने थे? वो 30 थे. तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया?
30. And the number of sample points in an event A. And in an event A means कि आपके पास क्या था? A girl is chosen. And how many girls do you have in that class? 13 girls. So 13 by 30 is the probability of an event A. Then comes probability of an event B. Now what is an event B? An A student is chosen. So how many students are there who have scored an A grade? Total there are 9 students. So 9 by 30 is the probability of an event B that an A student is chosen from that maths class. Then comes minus probability A intersection B, the students that are common in both of these events. So total number of sample points that are common in both A and B, that means this numerator term divided by number of sample points in the entire sample space. Number of students in the entire sample space means the number of total students that are enrolled in that maths class, that are 30 students. So simply denominator में आपके पास 30 आ गया. And the number of sample points that are common in A and B means those students who is a girl and who have scored an A grade. वो कितने हैं? वो आपके पास total 5 हैं. 5 girls made an A grade. ठीक है? So 5 by 30 is the probability of A intersection B. And right after the simplification, you'll get the answer 17 by 30. So this is the probability of choosing a girl or an A student. Okay, now coming towards the next example. Consider a pack of 52 playing cards. A card is selected at random. What is the probability that the card is either a diamond or a 10? Simply here the word either or is used, so that means you'll just find probability A union B. और से पहले वाले को event A define कर दो और के बाद वाले को event B define कर दो. So event A is defined as a diamond is selected and event B is defined as a 10 is selected. So simply right after defining the events that a diamond is selected is defined as an event A and a 10 is selected is defined as an event B. So according to the addition law, probability A union B is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B. So what is probability of an event A? That means number of sample points in an event A divided by number of sample points in the entire sample space. A diamond is selected. We have a total of 52 playing cards in a complete deck. That means 52. So 52 नीचे denominator में आ गया according to the classical definition of probability. And how many sample points are there in this event? That is an event A. 13 cards belong to the diamond suit. So 13 by 52 is the probability of an event A. Then comes probability of an event B. Total number of sample points, that is equal to 52. And number of favorable outcomes in an event B, that is total 4 sample points. So 4 by 52. क्योंकि जो a 10 is selected means कि हर सूट में ये एक 10 का कार्ड होता है and we have a total of 4 suits. So 4 cards are there in a complete deck that are 10 in number. So 4 by 52 is the probability of an event B. Then comes probability A intersection B, means the cards that are common in both event A and B. दोनों में जो common है तो वो एक ही कार्ड है. That means क्योंकि B में आपके पास कौन कौन से हैं? B में सिंपली आपके पास 10, 10, 10, 10 ये वाले हैं. और डायमंड्स में आपके पास एस 2 3 4 5 6 अब फिर सो ऑन 10 जैक क्वीन किंग ये कार्ड्स होते हैं. सो ए इंटरसेक्शन बी मींस जो कॉमन है तो ये 10 एंड ये वाला 10 यही कॉमन है. बस आपके पास सिर्फ एक कार्ड कॉमन है इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज इवेंट्स. सो 1 by 52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. So simply substitute all these probabilities in this addition law and you get the answer 16 by 52. Coming towards the next question, a pair of dice are thrown.
Find the probability of getting a total of either 5 or 11. A pair of dice are thrown. A pair of dice means कि एक डाई को आपने 2 बार रोल किया तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है. हमने लास्ट क्लास में भी उसकी सैंपल स्पेस बनानी सीखी थी कि आपके पास अगर बाइवेरिएट टेबल हो तो बाइवेरिएट टेबल के थ्रू हम सारे सैंपल पॉइंट्स 2 डाइस के इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट वाज जस्ट लाइक कि लेट मी शो यू. Bivariate in a sense 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, the column will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो उसके सैम्पल पॉइंट्स आप किस तरह इनलिस्ट करते हो. 1, इसको ब्रैकेट में लिखा. देन कम्स 1, 2 अप टिल सो ऑन. वो आपके पास कहाँ तक जाएगा. 6, तक. ठीक है. सो दिस वाज द बाइवेरिएट टेबल जहाँ आप 2 डाई को जब रोल करते हो तो उसके सैम्पल पॉइंट्स इनलिस्ट कर सकते हो. So now you have to find the probability of getting a total of either 5 or 11. यहाँ पे भी देखो either और का वर्ड यूज किया गया है. That means आप A यूनियन B वाली चीज ही यहाँ पे यूज करोगे. So simply you can define the event A as a total of 5 occurs, and event B you can just define it as a total of 11 occurs. ठीक है. A total of 11 वो आपके पास ये आया. A total of 5 वो आपके पास ये आ गया. A total of 5 means 1, 4. एक सैम्पल पॉइंट ये था तो 1 plus 4 means 5. वो इसमें आ रहा है. 2 plus 3 5, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5. So these are the 4 outcomes that will result in a total of 5. Then comes a total of 11. A total of 11 means 5 plus 6, 6 plus 5. ये दो सैम्पल पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका सम जब आप करोगे वो 11 के इक्वल आएगा. So according to the addition law, probability A union B is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B. So probability A, आपके पास classical definition के accordingly number of sample points that are of an event A divided by number of sample points in the entire sample space. तो वो तो total आपके पास 36 sample points होते हैं जब आप एक डाई को 2 बार रोल करते हो. और event A के sample points कितने हैं वो ये 4 है. So 4 by 36 is the probability of an event A. Then comes probability B. वो आपके पास कितने फेवरेबल आउटकम्स है इवेंट बी के. वो 2 सैम्पल पॉइंट्स हैं. तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ गया और इसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन द एंटायर सैम्पल स्पेस के साथ. दैट इज इक्वल टू 36. So 2 by 36 is the probability of an event B. तो राइट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you'll get the answer 6 by 36. तो आपके पास 1 by 6 is the probability that a total of either 5 or 11 will occur. वो आपके पास 1 by 6 है. ठीक है जी. Then comes a glass jar contains 1 red, 3 green, 2 blue and 4 yellow marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is yellow or green? So you can simply define as a marble that is chosen is yellow in color. इसको आप एक इवेंट डिफाइन कर दो और दूसरा इवेंट आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो. द ग्रीन मार्बल इज चोजन, इसको इवेंट जी का नाम दे दो. सो सिंपली यू हैव द प्रोबेबिलिटी. आप क्या कर रहे हो, आपने प्रोबेबिलिटी आप चाहे इसको इस तरह लिख लो या सिंपली आप इसको इस तरह लिख लो. प्रोबेबिलिटी वाई यूनियन जी, ये फाइंड आउट करना है. मीन्स उन्होंने कहा है कि जो बॉल आप या जो मार्बल आप चूज करोगे इट इज ईदर येलो और ग्रीन. तो वो आपके पास क्या बनता है, येलो प्लस ग्रीन. अब मेरी बात सुने, दोनों कॉमन हो सकते हैं. क्या आप कहो
येलो भी हैं एंड वो ग्रीन भी हों, जाहिर सी बात है एक ही कलर होगा, या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रीन, वो आपके पास ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो टोटल आपके पास बॉल्स कितनी थी, 1 + 3 + 2 + 4, ये सारी बॉल्स निकाल दो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमें पता चल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 10। तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 10, और आपने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स अब डिटरमिन करने हैं जो कि हैं येलो इन कलर। तो येलो बॉल्स कितनी हैं, येलो मार्बल्स आपके पास 4 हैं। So 4/10 is the probability that the yellow marbles are chosen. Then comes the marbles that are green in color. तो green marbles आपके पास कितने हैं, there are total 3 green marbles in a complete glass jar. That means 3/10 is the probability that the green marble will be chosen. So simply you can add both of these probabilities. That means 4/10 plus 3/10, that is equal to 7/10. So this is the probability that the marble chosen is either yellow or green. Okay. On New Year's Eve, the probability of a person having a car accident is 0.09. The probability of a person driving while intoxicated is 0.32, and the probability of a person having a car accident while intoxicated is 0.15. What is the probability of a person driving while intoxicated or having a car accident? अब आप इसको सिंपली इवेंट्स डिफाइन कर दो, तो वो क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो दैट अ पर्सन ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, ये आपके पास एक इवेंट आ गया, और हैविंग अ कार एक्सीडेंट, और के बाद वाले को इवेंट बी डिफाइन कर दो, ठीक है। सो यू हैव द केस ऑफ और, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आप फाइंड करोगे, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास इस केस में क्या है कि द पर्सन इज ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड और एक्सीडेंट, तो वो किस चीज के इक्वल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटॉक्सिकेटेड प्लस प्रोबेबिलिटी कि आपके पास क्या है, ही हैव अ कार एक्सीडेंट, वो आपके पास ये चीज आ गई, माइनस प्रोबेबिलिटी कि वो इंटॉक्सिकेटेड भी हो एंड उसका एक्सीडेंट भी हो। तो ये आपके पास एडिशन लॉ के अकॉर्डिंगली हो जाता है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो या सिंपली ए और बी के साथ इवेंट्स डिफाइन करके भी कर सकते हो। मैंने जिस तरह क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंगली इवेंट्स डिफाइन करके क्वेश्चन को कर दिया था। सो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज इंटॉक्सिकेटेड, the probability of a person driving while intoxicated is 0.32. तो वो probability already given है जो intoxicated की 0.32. Now the probability that he has an accident, the probability of a person having a car accident while intoxicated, ये वाली चीज नहीं है। हाँ ये वाली चीज देखो, the probability of a person having a car accident is 0.09. तो ये probability किस चीज की आ गई, एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट की जगह जो कि ये प्रोबेबिलिटी थी वो आ गई 0.09 माइनस इंटॉक्सिकेटेड एंड विल हैव एन एक्सीडेंट, तो वो आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग अ कार एक्सीडेंट व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड इज 0.15। ये जो चीज है वो आपके पास ये चीज आ गई जो कि 0.15 है। So right after simplification you'll get the probability 0.26. Okay, now coming towards the next question. An integer is chosen at random from the first 200 positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by 6 or by 8? ठीक है, it's divisible by 6 or by 8. और का वर्ड यूज किया गया है, दैट मीन्स कि हम एडिशन लॉ ही यूज करेंगे। और से पहले वाले को इवेंट ए डिफाइन कर लो और के बाद वाले को इवेंट बी डिफाइन कर दो, ठीक है। Event A आपके पास क्या है, that the integer chosen is divisible by 6, and event B is defined as the integer chosen is divisible by 8. So you can simply define the events just like this, and the sample space. Now what is the sample space? Sample space is the first 200 positive integers. That means आपके पास 1 से लेकर 200 तक ये सारे sample points आ रहे हैं sample space में. So total number of sample points are 200 in number.
So you have to firstly write that what is addition law in this case. तो आपके पास क्या बनेगा? Probability of an event A plus probability of an event B minus probability A intersection B. ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए निकालना है. तो क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द एंटायर सैंपल स्पेस. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए मींस इवेंट ए में कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे. टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या है? 200. और हमने देखना है कि 200 में से ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि 6 के टेबल में आते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 6. So 200 divided by 6 is equal to 33 sample points that are divisible by 6 out of these 200 positive integers. Same goes for this one. You have to determine that how many sample points are there that are divisible by 8 if you have 200 positive integers. First 200 positive integers. So simply divide 200 by 8. You'll get 25 sample points that are divisible by 8 if you have the first 200 positive integers. So these are the number of sample points. Number of sample points in an event A. Number of sample points in an event B. So both of these terms will come in the numerator term. That means probability of A की definition के accordingly number of sample points in an event A जो कि क्या है 33 और number of sample points in an event B वो आपके पास 25. अब इसको divide कर दो total number of sample points in the entire sample space के साथ जो कि ये होता है NS. तो वो आपके पास कितना है 200. तो इनको 200 से डिवाइड किया then comes probability A intersection B. Now you have to determine that how many sample points are there that are divisible by 6 and by 8 out of these first 200 positive integers. So simply you will take LCM in that case. LCM आपको लेना आता होगा. हम क्या करते हैं LCM में? 6, 8, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 6 4s are 24. So simply divide 200 by 24. You'll get the total number of sample points that are common in both A and B. आप पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर करोगे क्योंकि बिकॉज हमने एग्जैक्टली नंबर्स डिटरमिन करने हैं जो कि उस टेबल में आते हो. पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले को हमेशा इग्नोर किया जाएगा. So right after the simplification you'll get the number 50 by 200 जो कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकली है? That the integer chosen is divisible by 6 or by 8 if you have first 200 positive integers. All right. So coming towards the next example, in a class of 100 students, 60 students drink tea, 50 students drink coffee, and 30 students drink both. A student from this class is selected at random. Find the probability that student takes at least one of the two drinks. अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब भी आप एडिशन लॉ यूज करोगे ईदर और कॉमास या एटलीस्ट का वर्ड यूज किया गया हो देन यू आर सपोज्ड टू यूज एडिशन लॉ. सो दे आर जस्ट सेइंग कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 60 स्टूडेंट्स चाय पीते हैं, दे ड्रिंक टी, 50 students drink coffee and 30 students drink both coffee and tea. A student from this class is selected at random. Find the probability that student takes at least one of the two drinks. Means कम से कम एक ड्रिंक इन दोनों ड्रिंक्स में से पीता हो जो स्टूडेंट चूज करोगे. So you have defined an event T as the number of students who drink tea, and C can be defined as the number of students who drink coffee. So we have the probability of the students who drink tea क्योंकि हमें clearly पता है कि 60 students drink tea out of 100 students. So 60 by 100 is the probability of the students who are drinking tea. Then comes probability of C, that means the students who are drinking coffee. वो भी हमें clearly पता है 50 students are there who drink coffee.
So out of 100 students, only 50 students drink coffee. So 50 by 100 is the probability of the students drinking coffee. Then comes 30 students drink both. Students who are drinking tea and coffee is equal to 30 by 100. Means out of 100 students, only 30 students drink both tea and coffee. So you have to find the probability of a student that a student takes at least one of the two drinks. At least means either this or both. कम से कम एक, या तो ये पीता हो या तो ये पीता हो या तो दोनों पीता हो. तो वो हमें पता है ये एडिशन लॉ ये होता है इस केस में. Probability T plus probability C minus probability T intersection C. So probability of T is equal to 0.6. Probability of students who are drinking coffee is equal to 0.5, and the students who are drinking both tea and coffee is equal to 0.3. So right after simplification, you'll get the answer 0.8. Coming towards the next example, a card is drawn at random from a deck of ordinary playing cards. What is the probability that it is a diamond, a face card or a king? अब यहाँ पर देखो कॉमास और का वर्ड यूज किया गया है. दैट मीन्स यू विल जस्ट यूज एडिशन लॉ. लेकिन अब यहाँ पर आपके पास कितने इवेंट्स हैं? यहाँ पर आपके पास 3 इवेंट्स हैं. कॉमा से पहले एक इवेंट जो कि डायमंड है, कॉमा के बाद एक इवेंट है जो कि फेस कार्ड है, उसको इवेंट बी डिफाइन कर दो, और के बाद किंग है जिसको इवेंट सी डिफाइन कर दो. ठीक है. अच्छा, जिनको कार्ड्स का नॉलेज नहीं है वो इस पिक्चर के थ्रू भी कार्ड्स का पता चल सकता है. दैट मीन्स डायमंड के पास कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? वो एस 2 3 4 अप टिल सो ऑन 10 जैक क्वीन एंड किंग. लाइकवाइज आपके पास क्लब स्पेड्स और हार्ट्स होते हैं. यही 4 सूट्स हैं और यही आपके पास नंबर्स होते हैं. तो इसके थ्रू भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो प्रोबेबिलिटीज. सो आपके पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी. इट इज ईदर अ डायमंड और अ फेस कार्ड और अ किंग, और किंग के लिए सी. ट्रेडिशनल लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो आपके पास ये लॉ बनता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए. इवेंट ए आपके पास क्या था? डायमंड. डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13. So 13 by 52 is the probability of an event A. Then comes probability B. B is face card. Face cards means ये जैक, क्वीन और किंग. ये जैक, क्वीन, किंग चारों सूट्स में है. So 4 3s are, ये आपके पास टोटल 12 कार्ड्स बन रहे हैं. So 12 by 52 is the probability of an event B. Then comes probability of an event C. ये आपके पास क्या है? A king. किंग आपके पास इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है. So 4 by 52. ठीक है. Then comes A intersection B. A intersection B means कि आपके पास डायमंड और फेस कार्ड के कॉमन, ये डायमंड होते हैं. ठीक है. और फेस कार्ड्स आपके पास ये होते हैं सारे, ये वाले. तो ये 3 कार्ड्स हैं जो कि कॉमन है. So 3 by 52 आपके पास A intersection B आ गई. Then comes A intersection C. A intersection C means डायमंड और अ किंग. डायमंड के ये कार्ड्स सारे और किंग की ये वाला कॉलम पूरा. तो ये किंग और इसका किंग, ये वाला जो आ रहा है यही कॉमन है. तो 1 by 52 is the probability of A intersection C. Then comes B intersection C. B intersection C means B and C. फेस कार्ड्स आपके पास क्या है? वो ये है. ठीक है. और किंग क्या है? वो ये 4 है. तो ये चारों कार्ड्स कॉमन आ रहे हैं दोनों में. So 4 by 52 is the probability B intersection C. Then comes A intersection B intersection C. पहले A intersection B निकाल लो. A intersection B means diamonds और ये face cards. ठीक है. तो वो 3 कार्ड्स कॉमन आ रहे हैं डायमंड्स और फेस कार्ड्स में. अब ये 3 कार्ड्स आपके पास निकल आए हैं. अब 3 कार्ड्स को कॉमन देखना है किंग के साथ. ये 3 कार्ड्स आपके पास A intersection B आ गया और फिर आपके पास किंग के ये 4 कार्ड्स. तो सिर्फ एक ये वाला पॉइंट है जो कि कॉमन आ रहा है. सो 1 by 52 इसकी जगह आ गया. एंड राइट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर 22 by 52.
Coming towards the next question. Sam started his new business. The chance of rupees 40,000 profit per month is 20%, and the chance of rupees 50,000 profit per month from the same business is 15%. What's the probability that he will get a profit of rupees 40,000 or 50,000? और का केस है तो सिंपली एक इवेंट डिफाइन करोगे दैट ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000, और एक इवेंट भी डिफाइन कर दो दैट ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 50. एक है ऑफ गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 और एक है ऑफ गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50,000. तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लगाओगे, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए आपके पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द डाई सैंपल स्पेस. तो आपके पास इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हमें क्लियरली पता चल रहा है, उन्होंने कहा है कि द चांस ऑफ रुपीज 40,000 प्रॉफिट पर मंथ इज 20%. तो हम परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. परसेंट का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय 100. आउट ऑफ 100 20 चांसेस, तो 20 बाय 100 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए आ गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी क्या आ गया, 15%. सो 15 बाय 100. और एट ए टाइम ये तो ही ना हो सकता कि आपके पास 40,000 एंड 50,000 प्रॉफिट हो, या तो 40 होगा या तो 50,000 प्रॉफिट होगा. so that means nothing is common in between both of these events. तो उसकी जगह जीरो पुट कर दोगे. And right after simplification, you'll get the answer that will be 35 by 100. So 35 by 100 is the probability that he will get a profit of rupees 40,000 or 50,000. Okay class, these 4 parts are there. You need to practice these questions at home. This is basically your homework. In fact, I'll be adding the slide right after the end of this lecture. Okay, so what is your homework? Basically, a die is rolled. Find the probability that the number obtained is greater than 4. इस चीज की probability निकाल दो. It's a very easy task. 2 coins are tossed. Find the probability that when one head only is obtained. Only one head. इसका even define करो. Sample points enlist कर लो experiment की, because 2 coins का case है, experiment है. That means एक limited number of sample points आपके पास आएंगे. So you can simply define all the sample points in this random experiment. Then comes 2 dice are rolled. Find the probability that the sum is equal to 5. 2 बार die roll किया, sample points enlist करो, and you have to find the probability that the sum is equal to 5. A card is drawn at random from a deck of cards. Find the probability of getting the king of heart. आपके पास एक कार्ड की सिलेक्शन होनी है out of 52 cards. Now you have to find the probability that the king of a heart is appear. आपको पता होना चाहिए हार्ट में आपके पास ये कार्ड्स हैं और उसकी किंग की बात की जा रही है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. इन शॉर्ट, कार्ड्स के नॉलेज के लिए आपको इस चार्ट का पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है. Okay, coming towards the question. The blood groups of 200 people is distributed as follows. 50 have type A blood group, 65 have B blood type, 70 have O blood type, and 15 have type AB blood type. If a person from this group is selected at random, what is the probability that the person has O blood type? अब यहाँ पर देखो ना ईदर का वर्ड यूज किया गया है, ना एटलीस्ट का वर्ड यूज किया गया है, ना कॉमास गिवन है, ना और का वर्ड यूज किया गया है. सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि एक
पर्सन को रैंडमली चूज किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसका ओ ब्लड टाइप हो, ठीक है। ओ ब्लड टाइप में आपके पास कितने हैं, 70 टोटल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि ओ ब्लड टाइप में आ रहे हैं वो 70 है। ऊपर क्या आ गया, 70 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट ए, उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दिया। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मींस टोटल आपके पास कितने पीपल थे, देयर वर टोटल 200 पीपल जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया गया है। So 70 by 200 is the probability that if a person is randomly selected, he will has O blood type. ठीक है? So coming towards the next question. An integer is chosen at random from the first 10,000 positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by at least one of the numbers 2, 4, 8? ठीक है, अब आपके पास क्या है, 10,000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसमें से एक इंटीजर को रैंडमली चूज करना है। प्रोबेबिलिटी निकालो, जो इंटीजर आप चूज करोगे इट शुड बी डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर 2, 4 और 8। जब आपके पास एटलीस्ट, ईदर और या कॉमास गिवन हो, दैट मीन्स कि आप क्या यूज करते हो, एडिशन लॉ। सो एडिशन लॉ के अकॉर्डिंगली आपके पास कितने इवेंट्स हैं, यू हैव अ टोटल ऑफ 3 इवेंट्स। The first event is defined as that the integer chosen is divisible by 2. Then comes event B, that the integer chosen is divisible by 4. Then comes event C, that the integer chosen is divisible by 8. So you can simply define these events in this way. And according to the addition law, probability A union B union C is equal to probability A plus probability B plus probability C minus probability A intersection B minus probability A intersection C minus probability B intersection C plus probability A intersection B intersection C. So total number of sample points, probability of event A is defined as number of sample points in an event A divided by number of sample points in the entire sample space. Event A के sample points, इवेंट ए आपके पास क्या था, दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 और टोटल इंटीजर्स आपके पास कितने हैं, 10,000। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को 2 पे डिवाइड कर दो। दैट मींस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5,000 सैंपल पॉइंट्स आर देयर दैट आर डिविजिबल बाय 2। सेम गोस फॉर दिस वन एंड दिस वन। 10,000 को 4 पे डिवाइड करो तो 2,500 सैंपल पॉइंट्स आर देयर दैट आर डिविजिबल बाय 4 आउट ऑफ 10,000 पॉजिटिव इंटीजर्स। Then comes 10,000 divided by 8, that is equal to 1250. So 1250 integers are there that are divisible by 8 out of 10,000 positive integers. Then comes number of sample points that are common in both A and B. इसके लिए A and B means 2 and 4, आपने अब 10,000 में से देखना है कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि 2 के टेबल में भी आते हैं एंड 4 के टेबल में भी आते हैं। तो क्या करोगे, 2 and 4 का एलसीएम ले लोगे। वो आपके पास क्या आया, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 2 into 1 into 2, that is equal to 4. तो 10,000 को 4 पे डिवाइड करोगे मींस एलसीएम जो लोगे उसका आंसर जो आएगा उसके साथ डिवाइड करना है। 2,500 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि 2 के टेबल में भी आते हैं एंड 4 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। देन कम्स बी एंड सी। बी एंड सी में 4 और 8 आते हैं। 4 और 8 का एलसीएम लोगे, व्हाटएवर द आंसर इज दैट इज इक्वल टू 8। तो 10,000 को 8 पे डिवाइड किया, 1250 सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि 4 के टेबल में भी एंड 8 के टेबल में भी डिविजिबल हैं, दोनों में डिविजिबल हैं। Then comes A and C. A and C means 2 and 8. 2 and 8 का LCM लोगे, then 8 is the answer. So 10,000 को 8 पे डिवाइड करो, 1250 sample points are there और 1250 integers are there that are common in both 2 and 8. That means वो 2 के टेबल में भी आते हैं, वो 8 के टेबल में भी आते हैं out of these 10,000 positive integers. Then comes number of sample points that are common in 3 of them, A, B and C. तो आप तीनों का एलसीएम लोगे,
इन तीनों का, 2, 4 और 8। 2, 4 और 8 का एलसीएम आप किस तरह लोगे? So 2 into 2 into 2, that means it is equal to 8. So 10,000 divided by 8 is equal to 1250. So total 1250 sample points are there that are common in 3 of these events. That means 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, 8 के टेबल, तीनों के टेबल में वो आते हैं. वो टोटल 1250 सैम्पल पॉइंट्स हैं out of these 10,000 positive integers. So simply substitute all of these probabilities into this addition law, जो कि 3 इवेंट्स का था. और right after substitution you'll get the answer 5,000 divided by 10,000. ये आपके पास के जो है वो 1000 को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है जी. This was your homework. I've already told you people to solve all of these 4 parts. और इसका आंसर आप लोग मुझे ईमेल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, या हम नेक्स्ट जो लाइव सेशन लेंगे उसमें इनके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. Okay, so we can sum up that what we have studied in today's lecture, we have practiced different questions related to addition law. Basically, what was addition law? जब आपके पास क्वेश्चन में either or at least commas given हो तो उस केस में हम addition law यूज करते हैं. अगर 2 इवेंट्स हैं तो एडिशन लॉ ये होगा या ये होगा. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था कि फर्स्ट वाले लॉ में आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर इवेंट्स नहीं होते तो उस केस में ये वाला रूल लगता है. दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन आएगा दोनों इवेंट्स में. अगर दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, दैट मीन्स ये एडिशन लॉ होल्ड करेगा. और एडिशन लॉ को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 3 इवेंट्स, तो उस केस में हमारे पास ये बनता है. ठीक है. देन हमने डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं related to addition law for 2 events and for maximum 3 events. ये rule आप 4 events के लिए भी extend कर सकते हो. You can practice different questions related to probability just for the sake के you आपका concept जो है वो clear हो जाए. But still, if you'll find any difficulty in this recorded video, you can ask me via email or you can just comment below the given video. So see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.